गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। पहले इसमें बेसिक्स कुछ डेफिनेशन यूक्लिड ने डिफाइन करी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, ए पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, यानी एक पॉइंट क्या है जिसके हम पार्ट नहीं करते। दिस इज अ पॉइंट denoted by dot, point A, point B, point C and so on. Second is line. A line like this which has no breadth, length and breadth होती है, जिसमें लंबाई हो, लेंथ हो, breadth नहीं हो, that is a line. End of lines, इस लाइन के जो ends हैं that are points, that is we can call it BC, line BC. B and C. Straight line when it lies between two fixed points, whose two points are fixed, two end points are fixed. Surface is that which have length as well as breadth, यानी ऐसी सरफेस किसको कहते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होती हैं। ये एक सरफेस है, ये पोर्शन, ये एक सरफेस है, ये सरफेस इन विच लेंथ एंड ब्रेथ बोथ एज, नेक्स्ट इज एज, किनारा, ये एज, ये जो इस किनारे हैं, ये जो किनारे हैं इसके, ये जो एंड पॉइंट्स हैं, एंड लाइंस हैं, इस सरफेस का एंड जो है ये सब क्या है इसके एज। और अगर ये प्लेन है तो इसी को प्लेन सरफेस भी कहते हैं। इसके बाद इसके कुछ एक्सियम्स हैं, यूक्लिड्स एक्सियम्स। ये तो थी सब डेफिनेशंस, पॉइंट की, सरफेस की, लाइन सेगमेंट की, स्ट्रेट लाइन की, प्लेन सरफेस की। अब यूक्लिड्स एक्सियम, पहले आप ये देखिए कि एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स और पोस्टुलेट होते क्या हैं कि दे आर एक्सेप्शंस, यानी एजम्पशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं किए होते हैं, लेकिन दे आर 100% राइट, यानी सही है, दे आर यूनिवर्सली ट्रूथ बट दे आर नॉट ट्रू। तो कुछ यूक्लिड्स के सम एक्सियम्स हैं। फर्स्ट एक्सियम, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पहला क्या था कि थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग, दैट इज सपोज कीजिए हमने ये ले लिया x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू जेड। क्या कह रहा है, थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी ये दो चीजें थी y और z, ये x के इक्वल भी है, ये z भी x के इक्वल है। इट मींस फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट y इक्वल टू z, यानी कि हम ये देखें LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। ये फर्स्ट एक्सियम है जो जनरली सबको पता है। सेकंड, इफ इक्वल आर एडेड टू द होल आर इक्वल, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल, यानी दो चीजें इक्वल दी हुई हैं, सपोज कीजिए, सेकंड पोस्टुलेट है, सपोज कीजिए A इक्वल्स टू B, में सेम चीज ऐड कर रहे हैं। इफ वी ऐड that is a plus 2 equals to b plus 2 is equal, suppose इसी में equals are equal, जैसे मान लीजिए 20 equals to 20 लिखा हुआ है, इसमें हमने दोनों साइड में 5 ऐड कर दिया, that is 20 plus 5, ये means that is 25 will be 25, there will be no change. It means when we add equal in equal, then there will be no change. And third is same, when we subtract, third is फ्रॉम द इक्वल्स में से सेम थिंग अगर सब्ट्रैक्ट करे जाएंगे
there will be no difference. Just like in this case, if we take 20 equals to 20 and subtract 5 from both the sides, the answer will remain same, that is 15 equals to 15. If A equals to B, then we subtract 2, or we can subtract like this. A equals to B, we will subtract same thing, that is A minus X equals to B. We don't know what is the value of X, but X is same, therefore this will be equal. Next, things which coincide to each other एक सी होंगी तो they are equal to each other. Equal, same चीज दोनों बराबर होंगी. The whole is greater than the part. ये whole चीज लिए हमने कुछ भी, इसका हम कितना भी पार्ट लें, 10 पार्ट लें, 20% लें, 30% लें, इतना सा पार्ट लें, इतना लें, ये कितना भी ले लें, ये पूरा हम ले लें, लेकिन इतना सा छोड़ दें. Suppose we are taking 98%, but it is less than 100%. Always. That is, when we take a part, it is always less than a whole. Next is, things which are double to the same thing are equal to each other. Things which are double of the same thing are equal to one another. Suppose x equals to 2a, y equals to 2a, therefore x equals to 1. That is, the thing equals to double, यानी इस a के डबल x भी है, a के ही डबल y भी है, then x equals to y. And suppose कीजिए a एक thing है, if x equals to half of a, last point, that and y equals to half of a, then x equals to y. यानी कि कोई चीज अगर किसी के हाफ के बराबर है तो वो भी आपस में इक्वल होंगी, और कोई चीज अगर उसके थिंग के डबल के बराबर है तो वो चीज भी आपस में बराबर होगी. These are the axioms of Euclid. Now we will proceed for the postulates of Euclid, that are known as Euclid's postulates. There are 5 postulates, in which fifth is very important. First, a straight line may be drawn from any one point to other part. One point है, second point है, एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते. फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगर है, ये आप ड्रॉ, यहाँ पे अगर है, it means you need 2 points to draw a straight line. First postulate. Second postulate of Euclid is terminating line whose length is not fixed. A terminated line can be produced indefinitely like this. The symbol is like this, that you will increase the length of the line segment as here length is not fixed. It is produced indefinitely. Third postulate of Euclid is a circle can be drawn with any center and any radius. Take this as center, with any center radius, you may make a circle like this. Take this as center, you may draw a circle like this. Taking this as center, you may draw a circle like this. यानी आप सेंटर्स भी अलग कर सकते हैं और रेडियस भी चेंज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के सर्किल्स उसमें ड्रॉ कर सकते हैं. That is the third postulate. Very easy postulates हैं. Fourth postulate
All right angles are equal to one another. Both postulate. Everybody knows all equals, that is 90 degree. This is again 90 degree. This is again 90 degree. But these all are equal. According to Euclid's fourth postulate, all right angles are equal. Don't suppose its size. The value is 90 degree. It means all the angles are equal. And the fifth very important postulate, if a straight line falling on two straight lines make the interior angle on the same side of it taken together less than 290 degrees, then the straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles triangles. Two right angles. ये दो साइड्स हैं, ये दो लाइन. अब आपने कोई भी एक लाइन उस पर ड्रॉ कर दी. इसमें इंटीरियर एंगल्स ये बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी. एक ये सी और दिस इज डी. अब यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट सेज दैट sum of angle A and B, angle A plus angle B you have to find out, and angle C plus angle D you have to find out. Two right angles means 2 into 90, that is 180. The sum which is less than 180 degree यानी जिनका सम एंगल इन दोनों का सम 180 या इन दोनों का सम 180 से जिसका एंगल कम होगा उसको आगे एक्सटेंड करेंगे. दे विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. ये आप आगे बढ़ाएंगे तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट. A line which cuts two lines is called a transversal line. A common line between two line segments is called transversal line. यानी कि जब दो लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल्स को आप सम करेंगे तो उनका सम आपको देखना है. अगर उन दोनों के सम 180 से कम आ रहा है, जिस साइड का सम 180 से कम आएगा उसी तरफ लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. फॉर एग्जांपल सपोज दिस, आपने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन की, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल. आप इन दोनों का सम करके देखिए, इन दोनों का आप देखिए, इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो ये इंटीरियर एंगल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस बीच में कम होता जा रहा है. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स वेयर द सम इज लेस will intersect, but the sum is less than two right angles, that is less than 180. These are the some definitions, axioms and postulates of Euclid. Now we will proceed for exercise 5.1. We will start exercise 5.1. First question is true false, that is which of the following statements are true and which are false. You have to give reasons. Question number 1, first part, only one line can be passed through a single point. The answer is false. First part is saying that only one line segment is passed through a single point. We can draw infinite lines because therefore the answer is false. So many lines can be passed through a single point. Second is there are an infinite number of lines which passes through a distinct two points. दो पॉइंट से जाने वाली यानी a single line is there which pass through it. No another ray will be passed through it. Again this is false. यानी एक दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होगी, उससे ज्यादा लाइन पास नहीं हो सकती. थर्ड पॉइंट इज a terminating line has produced infinitely on both the sides. अभी मैंने बताया था infinite terminating line can be drawn infinitely on both the sides. It can be extended. It means it is true. You have learned.
in the video. Fourth, if two circles are equal, then their radius are equal. Fourth is, if we are saying that two circles are equal, suppose this and this, two circles are equal, then the radius, that is R1, and suppose this is R2, that is R1 equals to R2. Because if two circles are equal, then their circumference, that is 2 pi R1, equals to the circumference of the other circle, that is 2 pi R2. 2 pi is cancelled, therefore R1 equals to R2. It means when two circles are equal, it means its surface circumference, that is the perimeter of the circle, is equal. By that formula, by using that formula, that is 2 pi R1 equals to 2 pi R2, we will get R1 equals to R. It means it is true. Question number 5. In figure, this is AB. PQ and XY. There are three lines, AB, PQ and XY. There are three lines. It is given that AB equals to PQ, AB equals to PQ and PQ equals to XY. AB equals to PQ and PQ equals to XY. You have to show that AB equals to XY. Axioms अभी पढ़ी थी, equals are equal to each other, same are equal to each other. Because it is AB equals to PQ, equation number 1, 2, from 1 and 2. Putting the value of PQ as XY in this, that is AB equals to XY. This is PQ equals to XY, we will put XY in place of PQ, we will get AB equals to XY. Again, this will be true. Now, question number 2, you have to give definitions of parallel line. Parallel line, what are parallel lines? Parallel lines are those which do not intersect and the distance between them will remain same. Angle between two parallel lines is 0. These are parallel lines. These are parallel lines. Are the examples of parallel lines. Second, perpendicular lines. Two lines, two intersecting lines are perpendicular to each other if the angle between them
is 90 degree. Like this. One line, second line, and angle between them is this 90 degree. These all are perpendicular to each other. Line segment. Third is line segment. A line which has two endpoints are called line segment. Is called line segment. Its length is fixed. Fixed endpoints होते हैं this. Either 2 centimeter, 3 centimeter. It cannot be extended. Fourth, radius of circle. The distance between the point on the circumference of circle and its center is called radius of circle. Center point on the circle. This is called radius, denoted by small r. Next is square. A quadrilateral whose all the sides are equal and all the angles are of 90 degree is called I square. ABCD is a square whose all the angles are 90 degree. Both diagonals are also equal, and the diagonal this AC and BD are also equal is called square.
Question number 4. If a point C lies between 2 points A and B, ये 2 पॉइंट्स हैं A, B, इसके बीच में थर्ड पॉइंट C लाई कर रहा है, such that AC equals to BC, this AC equals to BC, then prove that AC equals to half of AB. AC equals to half of AB. This AB can be written as sum of AC plus BC, and we can write AB equals to AC plus, instead of BC we can write AC, because BC equals to AC. This is AB equals to 2AC, therefore AC 2AC equals to AB, interchange, hence AC equals to 2 is multiplying here, we will divide by 2, this is AC equals to half of AB, which is asked. Question number 5. In question number 4, point C is called midpoint. Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये लाइन सेगमेंट है, सपोज दिस इज A and B, इसका midpoint is C, and we have to prove that it has only one and only one midpoint. Line segment has one and only one midpoint. If C is midpoint, then AC equals to BC, AB equals to AC plus BC, AB equals to AC plus BC equals to AC, that is AB equals to 2AC. D is midpoint, then AD equals to DB, AB equals to AD plus DB, AB equals to AD plus AD, DB equals to AD. AB equals to 2AD. This is equation number 1. This is equation number 2. From 1 and 2, 2AC equals to 2AD. It means AC equals to AD, AC equals to AB. From figure, it is impossible. It is impossible, which shows that a line segment has only one and only one midpoint. Line segment has one and only one midpoint. Question number 6. इन फिगर 5.10, ये फिगर दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 6 में. A, B,
C, D. It is given that AC equals to BD. AC equals to BD. This AC equals to BD. You have to prove that AB equals to CD. AB equals to CD. देखिए दोनों इक्वल्स में से हम सेम इक्वल माइनस कर सकते हैं. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ द साइड्स. करेंगे तो क्या आएगा? AC माइनस BC इक्वल्स टू BD माइनस BC. AC फ्रॉम फिगर AC minus BC equals to AB. BD minus BC equals to CD. Hence,